और अभी 3 साल मैं भारत में रहती हूँ. और my role is to talk about the interface between the Brahma Kumaris and the future of power. Because sometimes we are asked, what have the Brahma Kumaris got to do with power? Within our organization, we have 20 wings or departments, and within all of those fields, people who are practicing meditation and would like to benefit people from their own profession have developed values programs. So within agriculture, medicine, education, business, we have many educational programs based on values. In the world today, it seems that we have given our power to business, to politics. One of the things in this program is that we invite participants, leaders, from all these fields, all these 20 fields, so arts, science, agriculture, medicine. We invite participants because one of the statements I think we are making with this is that each field needs to claim the power in that particular area. For example, we see that in medicine, sometimes it's a little bit taken over by business, or in media, in all these different fields. And so bringing leaders together to talk about power, the future of power. And what we're talking about specifically is values. What we're talking about is spirituality. In India, you have had very great saints, sages, Mahatmas, who have upheld the values of India. But I think the task that is being called upon now is actually maybe a little bit more difficult than philosophy. Because what is needed now is that leaders in every profession need to really bring this philosophy really into their professions. And so it's actually a very big call. India had very strong values. They were upheld. But now the values are a little bit sneaking away and they need to be brought back. And so this is what the future of power is about. It's about bringing leaders together to go inside, to bring back that spirituality, that introspection, that wisdom that has been in India for centuries, and holding on to it, not letting it slip away any more than it already has, but also making it so powerful that it's not just going to be to lead India, but to lead the world. We have centers in over 130 countries all over the world, and people are coming in droves. Many, many people now are looking towards a values-based life and towards meditation, because there's a lot of stress, there's a lot of situations we have to face. So the Brahma Kumaris is taking this ancient Raj Yoga of Bharat all over the world, and this is what we feel India's greatness is, and how India will best lead the world through this soft power. Thank you. Om Shanti. Thank you, Sister Maureen. So now, ladies and gentlemen, I'd just like to put this whole thing in a little bit of context. Sister Maureen has been telling you that now is the time for India to do this work of introducing these values and this soft power
into your world. And there is a reason for that, because whether you like it or not, it is clear that India is destined to lead the world. And in order to inspire you a little bit along those lines, I'd like to play a short film by someone I know you will recognize. There are two Indias in this country. One India is training at the leash, eager to spring forth and live up to all the adjectives that the world has been recently showering upon us. The other India is the leash. One India says, give me a chance and I'll prove myself. The other India says, prove yourself first and maybe then you'll have a chance. One India lives in the optimism of our hearts. The other India lurks in the skepticism of our minds. One India wants. The other India hopes. One India leads. The other India follows. These conversions are on the rise. With each passing day, more and more people from the other India are coming over to this side. And quietly, while the world is not looking, a pulsating, dynamic new India is emerging. An India whose faith in success is far greater than its fear of failure. An India that no longer boycotts foreign-made goods, but buys out the companies that make them instead. History, they say, is a bad motorist. It rarely ever signals its intentions when it's taking a turn. This is that rarely ever moment. History is turning a page. For over half a century, our nation has sprung, stumbled, run, fallen, rolled over, got up and dusted herself, and cantered, sometimes lurched on. But now, in our 60th year as a free nation, the ride has brought us to the edge of time's great precipice. And one India, a tiny little voice in the back of the head, is looking down at the bottom of the ravine and hesitating. The other India is looking up at the sky and saying, it's time to fly. Ladies and gentlemen, India is poised to become a future world power. And so now we come to actually my personal favorite part of our program, because all that you're experiencing today and all that we did yesterday actually is the brainchild of someone who became extremely inspired to get India to think more deeply and to discuss, to have a conversation about the values needed in order to create and lead with not hard power but soft power. Now, this individual has been associated with the Brahma Kumaris for about 20 years, but he is, surprisingly I think, a Muslim. He has Indian blood. He has spent, his family has spent the last 4 generations on the African continent. He currently lives in Nairobi in Kenya, and he works very closely with the Aga Khan Development Foundation. And in fact, he is the chairman of 54, yes, 54 publicly traded companies. So he is not a lazy man, he is a very busy man. But when I have spoken with him over these last 3 years, I have found out that he actually doesn't have that much interest in all those other 54 companies. Where his heart lies, where his soul lies, is with the future of power. And so he has spent these last 3 years developing and encouraging and inspiring all of us to come together with this work. And so now it's my great pleasure to introduce this man to you. He is a big man. He has a huge golden heart. He is one of the most generous people I've ever come across, and I'm very, very personally glad to call him my good friend, Mr. Nizar Juma. Thank you, Anthony. You know, Anthony introduces everybody, thanks everybody,
but nobody introduces him. So today, I'm going to do this pleasure to introduce Anthony Phillips. Anthony Phillips comes all the way from England to attend this program and yesterday's program. He is a corporate strategic advisor to very large corporations like Nestle. And normally, he's not easily available. So we are very happy that he's coming to Bharat, to India, to do this job for us. He has become a personal friend of mine, and I think that the service that he is performing from India is also commendable. So thank you, Anthony. Honored guests, all protocol observed, ladies and gentlemen. પહેલા મારે એ કહેવું છે કે હું ગુજરાતી છું. મારા બાપ દાદા ગુજરાતથી આવેલા, કેશોદથી આવેલા. પણ હવે અમારું ગુજરાતી જરા કટાઈ ગયું છે, કારણ કે 3 જનરેશન્સથી અમે આફ્રિકામાં રહીએ છીએ. પણ ભૂલાણું નથી, અને અમારો હાથ અહીંયા ઇન્ડિયામાં, ભારતમાં છે, અને પર્ટિક્યુલરલી સૌરાષ્ટ્રમાં છે. आज मैं हिंदी में बोलूँगा, क्योंकि मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो पहले से क्लैप नहीं करो. मेरी हिंदी पहला सुनो, उसके बाद क्लैप करना. तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपसे पहले से माफ़ी चाहूँगा. इधर राजकोट में आने में मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि ऐसा लगता है मैं घर पे आया हूँ. और राजकोट की हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है. सबने मुझे बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया है. फ्यूचर ऑफ पावर बारे में मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा क्या है, क्योंकि सबको पावर चाहिए, है ना. कोई ऐसा नहीं है वो बताएगा कि उनको पावर नहीं चाहिए. दूसरे को इकोनॉमिक, फाइनेंशियल पावर चाहिए, दूसरे को पर्सनल पावर चाहिए. सारी कंट्री को भी ज्यादा पावर चाहिए. आपको शायद मालूम नहीं होगा कि 2500 साल के तक वर्ल्ड पावर, विश्व का पावर इधर भारत में था. या क्लैप करो, क्योंकि ये बहुत अच्छा न्यूज़ है. ये पावर 2500 साल के बाद दूसरे कंट्रीज में गए, लेकिन इधर 2500 साल के तक ये पावर इधर था. इधर से पावर दूसरी कंट्रीज में गए. माना मैं एग्जांपल्स देता हूं, सारी कंट्रीज का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन इधर से पावर गया इजिप्ट, चाइना, ग्रीस, रोम, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन, और अभी ये पावर अमेरिका में है. लेकिन इधर जब पावर था, तब इधर का जो राजा थे वो बेनेवोलेंट किंग्स थे. बेनेवोलेंट किंग्स माना ये लोग, ये राजाओं इनकी प्रजा के प्यार से रूल करते थे, इनकी देखरेख रखते थे, इनके लिए प्यार था. और तभी ये इलेक्शनियरिंग ऐसा सब कुछ नहीं था, सेल्फिश एटीट्यूड नहीं थी. तो इनको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं. जब पावर इधर से निकल के दूसरी कंट्रीज में, दूसरे देश में गया, तो ये पावर हार्ड बनने लगा. हार्ड माना आज पावर का डेफिनेशन क्या है
अमेरिका का वर्ल्ड पावर का डेफिनेशन ये है कि हमारे पास कितना मिसाइल से, कितना बॉम्ब से, कितना गन से, और हमारा बैंक बैलेंस का हेल्थ क्या है ना? ये अभी पावर का डेफिनेशन हो गया है। और आप किसी को भी पूछो कि ये पावर रियल पावर है कि नहीं, सब बोलेंगे हाँ ये रियल पावर। तो इनको हम हार्ड पावर कहते हैं। 2007 से वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेशन हुआ, बोथ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिसेशन शुरू हुआ। अब तक ये रिसेशन में से यूरोप और अमेरिका निकल नहीं सकते हैं। जो जीडीपी माना उनकी कंट्री का जो टोटल वर्थ है, उनका जो एवरी ईयर का जो ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ अभी कुछ भी नहीं है, माना ये माइनस टेरिटोरीज में है, नीचे जा रही है। और मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज अभी क्लोज टू बैंक्रप्सी है, माना दिवाला। इनका कर्जा इतना बढ़ गया है कि वो लोग अभी पेमेंट वापस नहीं कर सकते, इस ऐसी हालत है। और अमेरिका भी यही हालत है। ये बात हम छुपा से नहीं बोलते, ये जग जाहिर बात है। मूडीज जो सब कंट्रीज का कैलकुलेशन करते हैं कि उनका ग्रेड क्या है, वो ग्रेड एक नॉच अमेरिका का नीचे हो गया, AAA में से AA+ हो गया। तो ये इसका क्लियर मैसेज क्या है कि ये हार्ड पावर का अभी अंत आ रहा है, और ये पावर वेस्ट में से वापस ईस्ट आ रहा है। और हमें ये यकीन है कि ये पावर अमेरिका से वापस इधर भारत आ रहा है। अभी जब ये पावर वापस आएगा भारत में, तो हमारे पास चॉइस है। एक है कि हम भी वेस्टर्न कंट्री जैसे बंदूक लेके बैठ जाए और हम भी हार्ड पावर प्रैक्टिस करें। ये नॉर्मल रिएक्शन है कि हमें ये करना ही पड़ेगा। और दूसरा चॉइस ये है कि 2500 साल की पहले जैसे हम थे, ऐसे हम सॉफ्ट पावर को वापस भारत में लाए। और हमें क्वेश्चन ये है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, और पॉसिबल है तो ये हम कैसे उनका अडॉप्ट कर सकते हैं कि ये सारी प्रजा में ये सॉफ्ट पावर वापस आ जाए। तो फ्यूचर ऑफ पावर का महत्व ये है कि पावर को सॉफ्ट पावर बना के वापस भारत में लाना। आज भारत की वैल्यू दुनिया में क्या हो रही है? दुनिया का टॉप में टॉप जो सीईओज हैं वर्ल्ड में, ये इंडियंस है। पेप्सी कोला का चेयरमैन आज इंडियन है, उसका सीईओ इंडियन है। आप जितनी भी कंट्रीज में अबे जाओ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आईटी का हेड और सीईओ सब इंडियन है। आज कोई भी चीज इंडियन दुनिया में फैशनेबल हो गई है, मालूम है आपको? इंडियन फूड, इंडियन टेक्सटाइल्स, इंडियन डिजाइन्स, इंडियन म्यूजिक, इंडियन इवन बॉलीवुड आज दुनिया में फैशनेबल हो गई। आज इंग्लैंड का यूनिवर्सिटीज भारत में हॉस्पिटल्स में उनके चीफ को भेजते हैं कि उधर जाके सीखो कि मेडिटेशन का हम क्योरिंग में कैसा उनका अडॉप्शन कर सकते हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि वेस्टर्न कंट्रीज
इंडिया को देख रही है कि इंडिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। जो भी चीज वेस्टर्न है वो इंडिया से बेटर है कि नहीं? नहीं है, लेकिन ये हम कहते हैं कि हम मानते हैं। तो ये हमें अडॉप्ट चेंज करना है, हमारे एटीट्यूड को चेंज करना है कि भारत की जो भी चीजें हैं उनको फैशनेबल बनाओ, इनको अडॉप्ट करो और फॉरेन जो चीज है उनको अडॉप्ट करने का स्टॉप करो। इसमें से एक चीज इंडिया की फेमस चीज ये है, नॉन वायलेंस के एटीट्यूड हमने अडॉप्ट किया है कितने साल से। और सेकंड, स्पिरिचुअलिटी। ये स्पिरिचुअलिटी का जो बेस है इधर भारत में, वो अब तक ये बेस इतना स्ट्रांग है, आपकी सारी सिस्टम कस्टम ये सब देखो क्या है आज भी। कौन और तिलक पहनता इधर, और इसका रीजन क्या है? कौन ओल्डर पीपल को इनका फीट टच करते हैं, क्यों? ये सब जो सिस्टम है, ये सब सिस्टम इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी से लोग डरते हैं, पर्टिकुलरली जो स्ट्रांग बिजनेस लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो कहते हैं देखो ये स्पिरिचुअलिटी सब ठीक है, लेकिन ये रियली स्पिरिचुअलिटी बुजुर्ग लोग के लिए है और बहनों के लिए, मर्द लोग के लिए नहीं है ना? ये भूल मत करो। और स्पिरिचुअलिटी दूसरे लोग कहते हैं कि देखो हमारा स्पिरिट एक वीक में एक दिन होता है जो हम स्पिरिचुअलिटी के लिए रखते हैं, सब दिन का सेम, सब रिलीजन वाले ऐसा कहते हैं। मैं क्रिश्चियन हूं तो मेरा दिन संडे है, मुस्लिम हूं तो फ्राइडे है, जूइश हूं तो सैटरडे है, इधर भी शिवा का हूं तो मंडे है, कितना सबका दिन होता है। तो ये वीक में एक दफा हमें ये कर लेने दो, रेस्ट ऑफ द वीक हमें जो करना है करने दो, इसमें इंटरफियर नहीं करो।